Good evening, guys. I hope you are doing good. And today we are going to start with Accounting Standard 10, the remaining part. Today is the last day for Accounting Standard 10. And in next session, we are going to start with new accounting standard, that is Accounting Standard 13. But before starting today's session, first we will quickly revise all accounting standards. Yes, number one, S1, disclosure of accounting policy. S2, inventory valuation. S3, cash flow statement. 4 is contingencies and events occurring after balance sheet date. 5 is net profit or loss for the period, by period items and changes in accounting policies. 6 number beta removed, 7 number construction contract, 8 number removed, 9 number revenue recognition, 10 number property plant and equipment, 11 number effects of changes in foreign exchange rate, 12 number accounting for government grant, 13 number is accounting for investment, accounting for amalgamation is 14 number, 15 is employee benefits, 16 borrowing cost, 17 segment reporting, 18 related party disclosures, 19 accounting for leases, 20 is earning per share, 21 is consolidated financial statement, 22 is accounting for taxes on income, 23 is investment in associates in consolidated financial statement. Then you have 24 discontinuing operation, 25 is interim financial reporting, 26 intangible assets, 27 is 27 is investment in joint venture. Then you have financial reporting in interest of joint venture, 28 is impairment of assets and 29 is provisions, contingent liability and contingent assets. Yes, say good evening बेटा, जल्दी से बोल दीजिए कमेंट सेक्शन में, फटाफट आ जाइए. एटलीस्ट से गुड इवनिंग तो मैं आगे जा सकता हूँ. यस, कार्तिक जी, प्रियंका जी, अभिषेक जी, लोकेश जी, रामदेवी, अभिषेक, गणेश, कोमल, साक्षी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा. जल्दी गुड इवनिंग बोल दीजिए. व्हाइट इज फॉर वेनसडे. अच्छा, त्योहार के दिन चालू है. ओके, चलिए. सो यस, गुड इवनिंग. अभिषेक गुप्ता की एक रिक्वेस्ट है, एमसीक्यूज को डिस्कस करना चाहते हैं. ओके, ठीक है. चलो, MCQs बेटा, let's see at the end of the session. I hope you have done with this accounting standard 10, property plant and equipment. In last session what we have seen, तो बेटा आपने क्या क्या देखा था, and I told you to write all these things for accounting standard 10. तो accounting standard 10 के चीजें आपने लिखी होगी ऐसा मैं assume करता हूं. 400 pages के बुक में what do you have to write? 400 pages के बुक में हमें, sorry, 100 pages की बुक first. So property plant and equipment, it is a tangible asset. It is held for use in production, supply, rental purpose and administrative purpose, expected to be used in for more than 12 months. तो बेटा ये था आपका पहला. S10 is not applicable. I am showing you the notebook of तमन्ना जी, जो हमारी एक स्टूडेंट है, तो आप लोग देख सकते हो. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें S10 not applicable whether other accounting standard permits it. Biological assets, that is living animal and plant, vesting assets and investment property. Okay. Recognition criteria for property, plant and equipment. PP should be recognized as an asset, probable that future economic benefit. This is a Rattamar point. You can see here, this is by heart point. Rattamar means by heart. Probable future economic benefit will flow to the enterprise and cost can be measured reliably. Then it is called as recognized an asset. Cost, how to recognize it? It is a situation 1 initially and situation 2 is subsequently. Subsequently means to cost of day-to-day services, replacement and regular major inspection. We have finished with these 2 parts, but beta we have not seen the problem. So problem को आज solve करेंगे. Okay. And replacement is very important beta. What is replacement? That today we are going to see. Before starting measurement, I will explain you one example of replacement. तो हम लोग एक example देखेंगे, replacement of an asset. Have you done with the screenshots beta? Can you tell me it in the comment section? Do you have that 100 pages ka book ready or not yet? Sir, I am your Om Dhakalji from Bhutan. Aure wah, FRO student. I am your foundation student. Yes beta, welcome. Remaining students beta, can you tell me it in the comment section that we have started with the accounting standard 10 and have you done with your screenshots?
जज भाई ब्रेक के बाद। और अदर स्टूडेंट्स बेटा जल्दी जल्दी बोल दीजिए, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, स्क्रीनशॉट्स हो गए थे। 100 पेजेस का बुक रेडी था। हाँ, तो बिफोर स्टार्टिंग टुडे सेशन, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू, आज हम लोग पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। विल सॉल्व सम टीवाई के क्वेश्चंस। टीवाई के क्वेश्चंस कॉस्ट के बारे में। यस, टीवाई के क्वेश्चन। टीवाई के नंबर 12 में आ जाइए। टीवाई के नंबर 12। कम टू टीवाई के नंबर 12 बेटा, फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12। टीवाई के 12। A big standard, very big standard. First, we'll study all, illustrations and some part of the theory. I will take it at the end. I don't know exactly institute ने प्रॉपर हम लोग टाइम मैनेजमेंट देखेंगे। यस, with reference to accounting standard 10, S10 revised, classify the following items. Okay. प्रैक्टिकल क्वेश्चन टीवाई के 12, दिस विल गिव यू द क्लैरिटी। ये क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देने वाला है। सो हिंदी में एक बार समझ लीजिए, ये क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यू हैव टू जस्ट डिवाइड इट between three parts: purchase price, directly attributable cost, and cost that is not included in determining the carrying amount of an item. So yes, these are some items, so you have to divide it in three parts. So can you tell me one by one item? Import duties and non-refundable purchase or purchase taxes. Yes, प्रिंस, थोड़ा सा। यस, कुछ स्टूडेंट्स की एक ही ज्यादा इंक्वायरी आ रही है, तो आप लोग, हाँ जी बेटा, यस जल्दी से ये पढ़ लीजिए एंड टेल मी कैटेगरीज। सी फॉर एग्जांपल, इंपोर्ट ड्यूटीज is we will consider it in Roman 1. Okay, import duties. Yes, can you tell me fast? Purchase price, where to consider? Initial delivery. TY के questions are really very good questions, beta. You can see TY के questions. Initial delivery is directly attributable cost, Roman 2. Initial operating losses is not included, is Roman 3.
Cost incurred while an item is capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than the full capacity is also not covered. Why? I will tell you the reason. Trade discount, we will deduct it directly, minus cost of relocating, we are not considering it. Installation and assembly cost, directly attributable expenses. Administration overhead, not considered. Yes. Now I will explain you one by one expenditure. One by one expenditure. Okay. चलिए ध्यान दीजिए. Purchase price. Purchase price of property, plant and equipment. Whether we will consider directly attributable expenses is also capitalized. So this kharcha is capitalized. Means you will add it in the asset. This kharcha is also add it in the asset. And this is in profit and loss account. Where you will consider capitalize means asset के cost में add होगा. Direct entry students. Asset के cost में add होगा. So you will show it in on the asset side. So there are 4 categories. Whether you will show it in P&L account, whether you will show it in the asset account, or whether you will show it in P&L expenditure or asset. So import duties and non-refundable purchase tax. So beta, we have purchased one asset from outside India and we are paying some import duties on that. That will be added if it is not refundable. Not refundable purchase taxes. If credit is available in GST, you are going to understand it. If credit is available, तो ये purchases में add होगा. Initial delivery, for example, initial delivery is directly attributable cost, where it is considered directly attributable cost. So initial delivery मतलब एसेट लेके आना है. ओके आपके घर तक लेके आना है तो उसके लिए जो भी डिलीवरी चार्जेस आप लोग दोगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एसेट. फॉर एग्जांपल मैं कोलकाता से पुणे एक एसेट लेके आ रहा हूं एंड दैट एसेट का कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज. उसको क्या करूंगा? आई विल कैपिटलाइज इट. ओके वेरी सिंपल. तीसरा initial operating losses. Now what is initial operating losses? Suppose beta example I will give you. Suppose if initially when I installed one asset, for example suppose कोई asset है. हाँ example asset is used, मैं जो एसेट यूज कर रहा हूं फॉर प्रिंटिंग पर्पस. ओके सो फॉर प्रिंटिंग पर्पस, सो आई बॉट वन प्लांट एंड मशीनरी फॉर प्रिंटिंग पर्पस. स्टार्टिंग में आई डू नॉट हैव एनी जजमेंट. स्टार्टिंग में आई एम नॉट हैविंग एनी जजमेंट हाउ मेनी पेजेस और हाउ टू फीड दैट पेजेस. और प्रिंटर आपको पता ही होगा तो प्रिंटर में हाउ टू फिक्स द पेजेस दैट वी आर नॉट अवेयर. सो इट मे हैपन that it costs you. Okay, it costs you what? Paper cost. Paper cost beta, it might get wasted and that is my loss. Okay, so that loss I can't transfer it to customer. That is my initial operating loss. तो देखो बेटा मैंने एक प्रिंटर लिया है, हिंदी में बताता हूं. और प्रिंटर लेने के बाद क्या हुआ बेटा? प्रिंटर लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंटर लेने के बाद वो प्रिंटर में मैं जब पेजेस डालता हूं मुझे अभी तक जजमेंट नहीं आया. बेटा नई नई एसेट है और प्रॉपर हमें जजमेंट नहीं आ रहा है. तो एसेट में क्या हुआ? एसेट में मैंने कैपिटलाइज जो लॉस जो होता है प्रिंटर पेजेस में वो डालना, ये मेरा ज्यादा लॉस हो गया. तो ये केस में क्या होगा? ये इनिशियली ऑपरेटिंग लॉस ये क्या होने वाला है? वो पेजेस जो डाल के मैंने बेटा वेस्ट हो रहे थे और वेस्ट होने की वजह से मुझे क्या हो रहा था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस ये हमारा, हम लोग क्या कर रहे थे कि पेजेस डालते टाइम वो हमारे वेस्ट हो गए बहुत सारे पेजेस और इसके वजह से मुझे लॉस हो गया स्टार्टिंग में, जब तक मैं वो एसेट को प्रिंटिंग प्रॉपर होता नहीं है तब तक. तो इसीलिए इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस जो है वो P&L में डालते हैं हम लोग, एसेट में नहीं ऐड करते. ऐसे कॉस्ट को एसेट में ऐड नहीं करते. आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट. कॉस्ट इनकर्ड while
an item capable operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than the full capacity. तो full capacity से, for example, one amusement park. I will explain it in the Hindi first, English first. Suppose if as amusement park is not operated at 100% capacity. Suppose you already know, all of you beta, in Mumbai we have Imagica. Imagica beta amusement park. So that amusement park, suppose there are 70 points, okay, 70 adventure points, and this 70 adventure points beta, out of that Imagica started with only 40 points, okay. So they are not 100% utilizing their capacity. They just want to take it on the trial basis. And that's why that 30% is their loss. But they just want to see that not operated or operated. So they are giving you discount. For example, if ticket charges are normally 1500, they have given you charges at 600 at the initial point. Why? Because they are not operated at 100% capacity. And therefore, such cost not to use your capacity, at 100% is your ऑपरेटिंग लॉस. और ये ऑपरेटिंग लॉस आप लोग P&L में डालते हो. कहां पे डालते हो? ये P&L में डालते हो. Okay, so cost incurred while an item capable operating in a manner intended by management has not yet brought into use or it's operated at less than their full capacity is considered as a direct, its cost is not added to your asset, but it is recorded in the P&L. Okay, तो ये जो cost है जो अपनी 100% ऑपरेट नहीं हो रही है, तो उसको हम लोग एसेट में ऐड नहीं करते, ये ध्यान में रखिए. एक बार एग्जांपल देता हूं तो ध्यान में आ जाएगा बेटा. एक अम्यूजमेंट पार्क है जहां पे आप लोग घूमने जा रहे हो. यस, और आपका जो ये अम्यूजमेंट पार्क है, जहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स आपके सिटी में, हर एक सिटी में बेटा ये अम्यूजमेंट पार्क होते ही है, जहाँ पे आप वो सब कौन से राइड्स होते हैं, आप ही लोग मुझे बताओ कि कौन से वो नाइट्रो वगैरह सब राइड्स होते हैं उसमें. तो आप वहां पे जाते हो ऐसा ऊपर से, वो और क्या रहता है, वो ट्रेन होती है ना, वो फुल स्पीड में जाती है, क्या बोलते हैं उसको. हाँ जी. तो ये राइड्स जो है वो पूरे चालू नहीं हुए. क्यों नहीं चालू है? क्योंकि अभी तक 100% काम नहीं खत्म चालू हुआ है. तो 60% ही काम उन्होंने चालू किया. अभी ये 60% काम चालू किया, मतलब 60% राइड्स चालू है. तो थोड़ा सा कम प्राइस आपको दे रहे हैं. मतलब उन्होंने 1500 रुपए का एक टिकट रहेगा, तो आपको अभी फिलहाल स्टार्टिंग में 600 में ये टिकट मिल रहा है. तो उनका ये कुछ कॉस्ट भी है उसमें, कि ये जो कॉस्ट है कि फुल कैपेसिटी में नहीं चलने की कॉस्ट, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसी कॉस्ट बेटा आपके जेब से जाएगी और ये P&L में जाएगी. एसेट में ऐड नहीं कर सकते हो. आया समझ में? ये एसेट में ऐड नहीं कर सकते हो, इतना याद रखिए. यस, आप लोगों ने मुझे राइड का नाम नहीं बताया अभी तक. हाँ, रोलर कोस्टर, वाटर स्लाइड्स, वेरी गुड. चलो, ये ऋतुराज और ये सबको पता है बेटा. यस, वेरी गुड. रोलर कोस्टर. नेक्स्ट कॉस्ट, ट्रेड डिस्काउंट, बट ऑब्वियस वी आर गोइंग टू डिडक्ट इट. Cost of relocating from one place to another place. From one place to another place, whatever the cost we are incurring for relocation, because I just want to shift that asset from one place to another place, it's your out of pocket cost. It is not added to your asset. Okay, so whatever the cost for that, it will be recorded in the profit and loss account. इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट. तो इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट इज बेटा बड़ ऑब्वियस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है. इसको हम लोग एसेट में ऐड करते हैं. इंस्टॉलेशन, एसी इंस्टॉलेशन का जो भी कॉस्ट होगा, इट इज एडेड टू योर एसेट. एंड लास्ट कॉस्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. वी आर इग्नोरिंग दैट एसेट कॉस्ट. व्हाई बेटा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहां पे कंसिडर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो दिस इज योर TYK नंबर 12. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. चलो, सॉल्व TYK नंबर 13 फटाफट. TYK नंबर 13 सॉल्व करो बेटा. चलो 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 चलो. TYK 13, TYK 13, चलो फटाफट. टेल मी द एसेट वैल्यू. फॉर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ द प्लांट 25 lakhs, कैपिटलाइज. एड C, initial delivery cost. Cost of site preparation, you have to prepare that site properly. Why beta? Because you want to install that asset. तो asset install करना है तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, कैपिटलाइज.
कंसल्टेंट यूज फॉर द एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ द प्लांट। ओके, सो कोई कंसल्टेंट को आपने बुलाया कि भाई ये एसेट को क्या करना है, तो ये एसेट को क्या करना है मतलब उसको पूछा कि कैसे एक्विजिशन करे, क्या करे, तो उसका हमने एक कंसल्टेंसी लिया, तो दैट इज ऑल्सो कैपिटलाइज। इंटरेस्ट चार्जेस पी एंड एल में जाएगा, इंटरेस्ट चार्जेस पी एंड एल में जाएगा, ये ध्यान में रखिए। Estimated dismantling cost to be incurred after 7 years. Estimated dismantling cost. So that cost is a capitalized cost. Capitalize. And operating losses before commercial production is P&L. Take a total of CC and tell me the answer. So this is IMP. Dismantling cost is added to cost, added to your asset. एक काम करो, इसको लिखना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। राइट डाउन प्रेजेंट वैल्यू, राइट डाउन प्रेजेंट वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल ऑफ ऑल सिक्स टुगेदर? टोटल इज 43 lakhs। वेरी गुड। सो टोटल कितना है? 43 lakhs। तो बेटा ऐड कर देना, 43 lakhs ऐड कर दीजिए। This question is of revaluation 14 and 15. We'll see it later. 16 number. Now you only tell me the answer. Sixteen number. Better read it first. Whole question first, please read it. I'm giving you exactly 5 minutes because this question is really very important. I want every one of you, because I just want to give you time for reading this question. Yes, anyone who solved this question, beta? Anyone? Anyone who solved this question? And please, beta, don't miss a single session. Okay, because accounting standards are not really very easy. इट्स रियली वेरी बोरिंग पार्ट। आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए तो यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग। आपको इतना ही मैं बोलूंगा कि आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हल्के में मत लीजिए। डेली बेसिस पे कुछ भी होने दो, दुर्गा पूजा होने दो, कुछ भी होने दो। आई नो त्योहारों का दिन चालू है और ये बहुत डेंजरस है। हम लोगों को लगता है कि चलो अटेम्प्ट बहुत दूर है, इतना फास्ट चला जाएगा ना, समझ में भी नहीं आएगा। चलो सॉल्व, 5 मिनट्स दे रहा हूं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट। एग्जैक्टली 5 मिनट्स यू हैव, एग्जैक्टली 5 मिनट्स। प्रॉपर सॉल्व कीजिए, प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम।
Illustration 16 beta is very important one. Cost of plant capitalize. Initial delivering cost capitalize. Cost of site preparation capitalize. Consultancy fee capitalize. Interest expenditure P&L. Operating losses before commercial production means present value is capitalize and operating losses in P&L. But now question is, so ये कितना हुआ 33,000 plus 100 plus 200 plus 50 and plus 30. 33 lakh 80,000. Now question is, so asset to be recognized is 33 lakh 80,000. But wait. Here we have not completed with the question. The company identifies motor installed in the plant as a separate component and cost is 5 lakhs and other costs are allocated proportionately. See, plant life is 10 years and motor life is 6 years. See, chalo. So I will show you the answer. Motor life and second one is plant life. $10 years, 6 years. So we will proportionately divide cost. So cost is 30 lakhs total. Out of that, 5 lakhs is motor life, motor cost. 25 lakhs. Other cost 3 lakh 80,000 because total asset cost is 33 lakh 80,000. Correct hai? Now three lakh 80,000 will divide it in the ratio of 25:5. This is the ratio. 3 lakh 80,000. So take on calci. 3 lakh 80,000 divided by 30 into 25. It will be 3 lakh 16,667. And here 63,333. So this is a total cost. I hope you understood what is it is called as beta in accounts language. It is called as component accounting. What is called as component accounting?
अच्छा, मैं एक बार वापस से बोलता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देखो मैं वापस से एक बार बोलता हूँ। आपकी टोटल एसेट की वैल्यू 33,80,000 है। इन्होंने क्या बोला है कि प्लांट को आप सेपरेट कंपोनेंट रखो, और उसके मोटर जो है, उसके अंदर का जो मोटर है, उसको आप लोग सेपरेट कंपोनेंट रखो। अब ये परचेस प्राइस में से, परचेस प्राइस मतलब 30 लैक्स, 30 लैक्स में से 5 लैक्स इधर लिखो, इस मोटर एंड अदर प्लांट, ये आपका हो जाएगा 25 लैक्स। अभी इसी रेशो में हम लोग 33,80,000 को डिवाइड करेंगे। कौन से रेशो में? 5:20, 5:25। 33,80,000 डिवाइड बाय 30 इंटू 5,63,333 एंड 25 इज इक्वल टू, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल, इट्स नथिंग डिफिकल्ट। 33,80,000 इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 25:5। समझ में आया? वेरी सिंपल। At the end of the fourth year, the company, now you have to understand what is replacement. So this question talks about not only not only component accounting. So first concept in this illustration is component accounting. So that's why I've taken this illustration. And second one is replacement. Okay, replacement. Replaces the plant, that motor, replaced the motor at rupees 6 lakh. An estimated useful life of new motor is 5 years. Also, the company revalued. Wait, now there is replacement. So, what is the important point? Replacement. And revalue the asset. So, now we have to understand revaluation. Revaluation. And see, after revaluation, there is retirement of asset. So, ये problem, blockbuster problem. All parts are covered. Component accounting, replacement, replacement के बाद revaluation, and after revaluation, then there is retirement. Okay, so 4 important parts: 1, 2, 3, and 4. I think component is clear for you, everyone. Component clear हुआ क्या बेटा? Anyone has difficulty in component? चलो, कंपोनेंट अकाउंटिंग में बोलो, कोई डिफिकल्टी है क्या? चलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम। कंपोनेंट अकाउंटिंग में कोई डिफिकल्टी है क्या? कंपोनेंट अकाउंटिंग में एनीवन हैज डिफिकल्टी इन कंपोनेंट अकाउंटिंग? इफ यू आर क्लियर विद द कंपोनेंट अकाउंटिंग, आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिप्लेसमेंट। मैं रिप्लेसमेंट पे शिफ्ट होऊंगा। डिसमेंटलिंग मतलब तोड़ना, एंड डिसमेंटलिंग मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस एसेट। हम लोग जब एसेट को तोड़ेंगे, तब मुझे 50,000 रुपए देना पड़ेगा एट दैट टाइम। सो दिस हैज टू बी कैपिटलाइज एज पर एस 10। इसको भी कैपिटलाइज करना पड़ता है, बट एट प्रेजेंट वैल्यू, एट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, आफ्टर proportionate, we are getting the value 28,16,667. Okay, so I will divide it. So cost is, so for you I will write it 33,80,000. I have divided it. I will show you the presentation, don't worry beta. Motor
and second one is other plant in the ratio of 5 to 25. So it will be 5,63,333, and other plant 28,16,667. ममता बेटा, ममता ये मैंने क्या किया, देख बेटा, जो प्लांट की कॉस्ट है ना, परचेस प्राइस 5 लाख है, तो परचेस प्राइस यदि 5 लाख होगा, जो मोटर कॉस्ट है तो अदर प्लांट कितने का होगा, 25 लैक्स। और हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, हमने प्लांट की कॉस्ट ऐड की, वो प्लांट लेके आना है यहाँ तक वो भी कैपिटलाइज किया बेटा, प्लांट जहां पे रखना था वो साइट हमने बनाया, उसका 2 लाख भी ऐड करेंगे। कंसल्टेंट, ये प्लांट जो है वो कैसे रखना है, अभी हम लोग तो पढ़े बेटा कॉमर्स वाले, तो हमने किसी इंजीनियर को बुलाया और उसको बोला कि तेरे एडवाइस पे बेटा हम लोग ये प्लांट को रखेंगे, तो वो बंदे को 50,000 रुपए दिया, वो भी कैपिटलाइज होता है, वो भी कैपिटलाइज होता है। इंटरेस्ट बेटा P&L का आइटम है, वो कैपिटलाइज नहीं होता है। डिसमेंटलिंग मतलब तोड़ने का कॉस्ट आज नहीं इनकर करेंगे, फ्यूचर में। अभी ये 50,000 हम फ्यूचर में इनकर करेंगे, तो उसकी आज की वैल्यू 30,000 है, मतलब मैं एफडी करके रख दूंगा और 10 साल बाद 50,000 रुपए लेके आऊंगा, तो मैं आज की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 30,000 को मैं ऐड करूंगा। एंड ऑपरेटिंग लॉसेस मतलब ये प्लांट चालू करने के पहले, मतलब मुझे कुछ कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करने के पहले मैंने ट्रायल रन पे ये प्लांट चला के देखा कि वो कैसे चल रहा है, कुछ उसमें से फॉर एग्जांपल बेटा, एग्जाम्पल मैं तुझे देता हूं तो तुझे समझ में आएगा। ओके, रेस्टोरेंट के केस में बेटा, अभी अपना तो आपको पता ही है, रेस्टोरेंट का केस में हम लोग क्या करते हैं, जब हमने शुरुआत में भट्टी वगैरह लगाया या हमने तंदूरी चालू किया या कुछ भी, मतलब वहां पे हमने क्या लगाया, तवा सब लगाया, पाव भाजी का काउंटर लगाया। अभी बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई पाव भाजी अच्छे से बन रही क्या, तो ट्रायल रन पे हम लोग पाव भाजी तैयार कर रहे हैं, अभी तक सबको फ्री में खाने को दे रहे हैं। ओके, अभी शुरुआत किया है, हमें देखना है कि हमारी पाव भाजी प्रॉपरली बन रही है क्या नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने के लिए, मतलब बेचने के पहले हमने लोगों को ऐसे ही देखा कि भाई ये बराबर चल रहा है क्या नहीं, प्रॉपर सब कुछ सेट हुआ है क्या नहीं, तो इसके लिए हमारा कुछ हमने फ्री में ये बांट दिया, तो वो मेरा ऑपरेटिंग लॉस है, तो वो ऑपरेटिंग लॉस हम लोग P&L में डालते हैं, वो एसेट में नहीं ऐड करते। ओके, सो ये मैंने सबको फ्री में दिया, मेरे तो जेब से पैसा गया ना बेटा, तो ये ऑपरेटिंग लॉस, और फिर मैं कमर्शियल प्रोडक्शन चालू करूंगा। मैंने पहले चेक कर लिया कि ये बराबर सब कुछ चल रहा है क्या, मेरे सब्जी रोटी बराबर बन रही है क्या, और इसके लिए मैंने लोगों को फ्रीली बोला है टेस्टिंग के लिए, तो वो टेस्टिंग के लिए जब मैं बुलाऊंगा तो वो एसेट के कॉस्ट में ऐड करूंगा कि बेटा जो भी मैंने खर्चे किए हैं, चिमनी बिठाया है या मैंने एग्जॉस्ट बिठाया हुआ है या सक्शन रहता है, ये सब हमने बिठाया हुआ है, तो ये जो रहेगा बेटा वो नहीं होगा, तो ये चीजों में ध्यान में रखो, ये जो ऑपरेटिंग लॉस है ये P&L में जाता है। तो कितना खर्चा हुआ मेरा, टोटल 33,80,000। अभी मैं कौन से रेशो में इसको डिवाइड करूंगा, तो 5:25। बड़ा प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें ब्लॉकबस्टर प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इसमें सब कुछ कवर्ड है। ओके, सो हमने क्या किया, 5 लैक्स के रेशियो में एंड 25 लैक्स, 5 लैक्स टू 25 लैक्स रेशियो में वी हैव डिवाइडेड दिस कंपोनेंट्स। ओके, सो बेटा ममता, ये अभी तक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी, 5:25। अभी मोटर की लाइफ कितनी है, मोटर की लाइफ कितनी है, life is 6 years and here life is 10 years. After 4 years, now what happened, after 4 years, okay, we replace the machine. See, after 4 years, so what is the depreciation, depreciation for 1-4, so 5,63,000, total life is 6 years and 4 years are completed, 4 years are completed. Here 28,16,667 divided by 10 into 4. So what is the balance? 3,75,000. See beta.
Written down value 28 lakh 16,667 divided by 10. So 28 lakh 16,667 minus 11 lakh 26,667. So we left with 16 lakh 90,000. Okay. And here it is 187,777. Okay. Now beta, we will replace this. So इसको हम लोग क्या करते हैं? When we are replacing it, we transfer this part to P&L. So this is called as replacement accounting. P&L to asset. 187,777. So replacement will be transferred to now your asset 187,777. We will transfer to P&L. Okay. And new motor is capitalized. So asset to bank. What is asset to bank? 6 lakhs. So what is my WDB? 16 lakh 90,000 plus 6 lakhs 26 lakh 90,000. What is the value? 26 lakh 90,000. Okay. ₹26 lakh 90,000. Any difficulty in this? Any difficulty in this? Okay. Now, yes. Any difficulty? Sorry. It is 22 lakh 90,000. Why I taken 26 lakh? I don't know. Huh. So it should be 22 lakh 90,000. Now, this is the new WDB. This is the new WDB. Yes, it's my mistake. 6 lakhs add किया तो 22 lakh 90,000. हाँ जी. Now the question is, बेटा please don't give up this question. This is very important one. हाँ? अभी क्या होगा? अभी ध्यान दीजिए. Now revaluation. Revaluation is 25 lakhs. Revaluation is 25 lakhs. Is given in the question. Now see beta, out of this revaluation, motor is recently purchased. Say yes or no. Yes. So motor is of 6 lakhs. And other is
is हाँ जी बेटा कितना आएगा 19 lakhs. Other part is 19 lakhs. Now whatever the part is 19 lakhs is actually revalued entire class. So 22 lakh 90,000. हाँ जी बेटा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 25 लाख है. ओके एंड योर WDV is 22 lakh 90,000. Out of this, motor is of 6 lakhs and your 16 lakh 90,000 is other plant. So your revaluation increases and whenever beta it is upward increase, upward. Okay, मेरी asset की value बढ़ गई तो it is called as revaluation surplus. What is called as revaluation surplus? What is the revaluation surplus? 2,10,000. 2,10,000. And what will be the entry? See, first entry I passed here P&L to asset. Second entry motor to bank. And third entry plant account debit 2,10,000 to revaluation surplus 2,10,000. Okay. Now, after revaluation, 25 lakhs, my asset is 6 lakhs and this is 19 lakhs. This is motor and this is other plant. What is the life of this motor after 5 years? New motor life is 5 years. And this remaining is, so total life is beta, remaining life after 4 years, starting में कितना था life? 10 years. Out of that 4 years are completed. So this life is 6 years. This life is 6 years. You got to know this concept अभी. हाँ. अभी क्या हुआ? After 8 years. 8 years means you are in 4th year. 4th year end to 8 year end. So that is after 4 to 8. What happened after 4 to 8? Depreciation. 5, 6, 7, 8. That is of 4 years. Depreciation of 4 years. 6 lakhs divided by 5 years into 4 years. 19 lakhs. Life is 6 years. And this is 4 years. How 4 years? 4-8. 5, 6, 7, 8. So my depreciation is 6 lakhs divided by 5 years into 4. 4,80,000. And here 19 lakhs divided by 6 into 4. Depreciation is 1 lakh. Yes, how much? 12,66,667. So your closing balance 1,20,000, that is 6 lakhs minus 4,80,000. And here your depreciation is 19 lakhs minus 12,66,667. 6,33,333. Okay. And what is the amount I received? Amount I received is, yes, now disposal. Amount I received is 6 lakhs.
So I will divide this 6 lakhs, rupees 6 lakhs. So this is my book value. I will divide in the ratio of 120 to 633.333. So take on calci 6 lakhs divided by 183. No, क्या टोटल है इसकी? 7,53,333 is a total. 7,53,333 रेशियो मिला इंटू 1,20,000 95 575 का अकाउंटिंग होगा and this is 5,04,425. So I'm in loss. So my loss is 24,425. I will explain you it once again. Don't worry. 128,908. And this loss is transferred to P&L. Check the answer. Institute का आंसर देखो लास्ट में. Most difficult question. PYK 16. Yes. And 2,10,000 is transferred to P&L. Return earnings, revaluation surplus, 2,10,000 is transferred to return earnings. Beta, how many of you got the concept? How many of you got the concept? Yes, मैं repeat कर दूंगा. Don't worry. I will give it in the writing, but I just want to see how many of you understood the concept. Most difficult question of S10, but all concepts are covered. So beta, don't give up. You will understand it. Don't worry. I will explain it once again. मैं वापस एक बार explain करूंगा. Then you will find it very simple. हाँ जी. Yes. बाउंसर था, ठीक है. चलो एक बार वापस सॉल्व करते हैं. ठीक है, स्टार्ट टू एंड. यू राइट विथ मी. रफ पेजेस पे आंसर लिखो. चलो ओके. अच्छा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ कॉस्ट ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन. लिखो TYK 16 A plus category question, one by one. So what is the first question? Yes, part 1. Write down part 1. Component accounting. Component accounting. Red pen. As lives of number 1 motor. But please do calculation, a proper calculation. And plant are different. Therefore, we will depreciate as per components. As per components. So there are two categories of components, motor and plant. Number 1, total cost of asset. Total cost of asset 33,80,000.
divided in the ratio of rupees 5 lakhs and 25 lakhs. Okay, write it properly, beta. 5 lakhs and 25 lakhs. So write down, beta. Serial number, particulars और total cost. Serial number भी मत लिखो. Total cost, motor, other plant. 33 lakh 80,000 in the ratio of 5 to 25. So take on calculator once again. 33 lakh 80,000 divided by 30 into 5. 563 333 and 28 lakh 16,667. So this is my part 1 component accounting. Okay. Part 2 replacement of motor after 4 years. Old motor is replaced with न्यू मोटर. कितना न्यू मोटर है बेटा, ध्यान दीजिए. न्यू मोटर ऑफ रुपीज 6 lakhs. Having life 5 years. Having life 5 years. So closing WDV after 4 years. Closing WDV after 4 years. Write down serial number, particulars, total, और टोटल बाद में लीजिए बेटा. टोटल बाद में लीजिए. पहले लिखो मोटर, प्लांट, टोटल. serial number 1 original cost. Total is 33 lakh 80,000. Motor is 5 lakh 63 333. एक लाइन छोड़ दीजिए, skip one line. Less depreciation for 4 years. 0-4.
Here life is, first ka life is 6 years. And here life is, you can write over there 10 years. Roman 1 डिवाइड बाय 10 नहीं, इसका लाइफ इज मोटर का 6 years. सो डिवाइड बाय 6 into 4. Roman 1 डिवाइड बाय 10. 10 is a life into 4. लीजिए कैलसी पे. डोंट गिव अप बेटा, डोंट गिव अप. What is the answer? 3,75,555. 11,26,667. 15,02,222. Written down value, that is book value, after 4 years. $28,16,667 minus 11,26,667. 16,90,000. $18,77,778. Till now, any difficulty, beta? Till now, any difficulty? Say yes or no. Till now, any difficulty? Yes, I'm waiting for your answer. Now, this part is replaced. And this part continue. So, replaced as per replacement accounting, transferred to P&L. And continue as asset, 16,90,000. Till now, any difficulty? Everything is clear? 4 to 8 years. But to Anmol, 4 to 8 years. That is part 3. Till now, everything is clear. So, beta, now, what will be the entry? Entry, profit and loss account debit to asset. Asset means motor component. $187,778. And second entry, motor component account debit to cash or bank. I replaced with new component 6 lakhs. So now my total cost जाने दो. So my motor component, plant component, and total. Motor component is 6 lakhs. A plus category question. Plant component
16,90,000. 22,90,000. Life 5 years. Life 6 years. And total. So this is my presentation. So part 2 finished. Part 2 finished. Part 3, revaluation. Revaluation. Now, beta, serial number, particulars, total. Here I will take total first. Motor and plant. Serial number 1, book value after 4 years. 22,90,000. 6 lakhs. 16,90,000. Roman 2, revalued amounts 25 lakhs. See, motor is just replaced. So this will be continue at 6 lakhs. Therefore, continue. Just replace, therefore, continue at 6 lakhs. There is no revaluation in motor component. And remaining is 19 lakh. This is very important. 19 lakhs is balancing figure. Balance. Roman 3. Just replace na beta. Difference. Difference is 2,10,000. And totally we will record it as plant component. So plant component account debit बढ़ाना है, increase to revaluation surplus. When beta asset is increasing, it is transferred to revaluation surplus. It is revaluation surplus. And if asset is decreasing, then P&L account debit. I am going to teach you. So this is the entry for revaluation. Increase your asset value from 22 to 25. Your motor component will be continued at 6 lakhs and your plant component will be 16,90,000. Now plant component to revaluation surplus. Easy. Next. Part 4. Part 4. Retirement. And here, retirement. Serial number, particulars, motor, plant, total. Roman 1. Revalued amount after 4 years. Motor 6 lakhs.
Plant 19 lakhs. Total 25 lakhs. Roman 2. Depreciation for 5-8 years. Total 5, 6, 7, 8, 4 years. Roman 1. What is the life? 5 years. So divide by 5 into 4. Roman 1 divided by 6 into 4. 6 lakhs divided by 5 into 4. 4,80,000. 19 lakh divided by 6 into 4. 12 lakh 66,667 plus 4,80,000 667. WDV after 8 years. 6 lakhs minus 4,80,000. 1,20,000. Roman 4. WDV over amount received. Amount received only 6 lakhs divided in 1,20,000 is to 6,33,3 ratio WDV के ratio में. So take on calci 6 lakhs divided by 7,53,333 into 1,20,000 95,575 5 lakh 04425 and therefore loss is 153,333 and motor component loss is 24,425 128,908. So entry is bank account debit 6 lakhs. Loss on motor component 24,425. Loss on plant component 128,908. To asset 75333. This is the last entry. And see, this revaluation surplus is transferred to retained earnings. This is the
actual provision after retirement of asset. Revaluation surplus you don't carry. That is after 8 years. So up to 8 years, balance in revaluation surplus. Up to 4-8 or 5-8. But after 8 years, no asset, so no revaluation surplus. The balance is transferred to retained earnings. A plus 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 category question. Everything is clear. Everything. Yes. Now tell me any difficulty. Yes. Yes, beta. Must question the replacement, old replacement transferred to P&L. I told you in the last session, wait for some time. I'm going to explain you this concept. And beta, yes, जो बच्चों को पास होना है. So what is the new concept that you understood? देखो, कंपोनेंट अकाउंटिंग क्या होता है ये हमें समझा कि दो पार्ट्स में डिवाइड करना. रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट क्या होता है? तो पुराने एसेट को रिप्लेस करो, नए एसेट में ऐड करो. सो P&L टू एसेट मोटर कंपोनेंट एंड न्यू मोटर कंपोनेंट टू बैंक. लाइफ अगेन डिफरेंट. देन वी अंडरस्टूड रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन मोटर कार में मत करियो क्योंकि वो जस्ट लिया है. सो पूरा रिप्लेसमेंट रिवैल्यूएशन ये प्लांट कंपोनेंट में किया. प्लांट कंपोनेंट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस एंड देन रिटायरमेंट. और ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. Everything. Here we have finished with the accounting standard. This question again and again is a blockbuster question. Conceptually, everything is clear, and those students beta who missed today's session, they won't understand this question. A plus 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 जो भी कैटेगरी आपको देनी है ये कैटेगरी का क्वेश्चन था. सब कुछ क्लियर कर दिया. वापस सॉल्व करना. डू नॉट गिव अप. ये क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करो. Don't refer the answer. Try by your own and everything will get clear for this question. So this is called as blockbuster question. मस्त था ना बेटा? हाँ. Now you can easily solve the next question. Next question. 17 नंबर बेटा. सिमिलर क्वेश्चन. छोटा भाई बोल सकते हम लोग ऑफ 16 नंबर. Yes, I'm very happy that you understood 16 number. And if you understood 16 number, your accounting standard is 100% clear. Retain earnings concept. Yes, beta. Ruturaj, I will tell you it in this question. Dismantling cost is what is the dismantling cost? Yes, dismantling cost is a cost. See, beta. I know I'm going to dismantle this asset after 10 years. After 10 years, I will incur 50,000 for breaking the asset. See, आप जो घर में रहते हो वहां पे आपने फर्नीचर बनाया और 10 साल बाद आप फर्नीचर को तोड़ने वाले हो और नई जगह पे लेके जाओगे या यू विल डिसकंटिन्यू. आपका जो ओनर है वो बोल रहा है भाई तुम्हारा एसेट लेके जाओ रे, हमें नहीं चाहिए. सो डिसमेंटलिंग कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर दैट यू विल इनकर इन द फ्यूचर. और ये कॉस्ट जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? वो हम लोग आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं. एंड टुडे इफ आई इनकर, सो दिस इज अ प्रेजेंट वैल्यू is 30,000. If I invest today 30,000 in the bank, after 10 years, I will get 50,000. So I will add not 50,000 in my asset because asset is recorded in 0 year. Therefore, we add dismantling cost 30,000 in the 0 year. .
Okay. सेवनटीन नंबर विल डू फर्स्ट. बेटा बहुत मुश्किल है. यस बेटा. 17 नंबर. चलो कंप्लीट करते हैं. भारत इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड acquired a heavy machine at 1000 lakhs. The breakdown of its component is not provided. The estimated life of the machine is 10 years. And at the end of the year 6, turbine, which is a major component, needed to replace, again replacement, as further usage and maintenance was uneconomical. The remainder of the machine is in the good condition and is expected to last for remaining 4 years. Okay, the cost of the new turbine is 450 lakhs. Give the accounting treatment of new turbine assuming straight line method of depreciation. See beta. See, now this is, we don't know the turbine cost in 1000 lakhs. It is year 0 cost. And 450 lakhs is cost to be incurred in year 6. When you are going to incur this cost? In year 6. So beta, turbine value is missing for the day. Okay. So here we know component accounting. Again, the question is of write down the answer. Illustration TYK 17. TYK 17. As turbine is having, write down, life of 6 years and remaining life of the machine is, remaining life of machine is 10 years. Therefore, component accounting has to be done. Okay, because lives are different. But turbine value, now red pen, turbine value is given after 6 years. Step 1, calculate present value of turbine. Step 2, total cost minus present value of turbine is equal to
cost of remaining asset. Cost of remaining asset. Very, very important step. Because today's turbine value is missing. It's not like TYK 16. In TYK 16, in TYK 16, in TYK 16, we have divided in the ratio of 5:20. But in 17, we do not have the value. And whenever we do not have the value, we have to calculate value of replacement by using present value concept. Very, very important point. Sir, how we got to know? Now see, beta, I'm going to teach you theory after this. And you will correlate theory with these examples. So I told you in the last session, skip replacement part, skip major inspection part, and I will teach you through examples. And now it's very simple for you. Now it's very simple for you. See the beta. बेटा ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर आपको इसके पीछे का थ्योरी समझ में आना चाहिए. यहाँ पे हुआ क्या, टरबाइन की वैल्यू ये दी है. टरबाइन का लाइफ 6 साल है, बचे हुए मशीन का लाइफ 10 साल है. तो 10 इयर्स लाइफ इज डिफरेंट, तो हम लोग कंपोनेंट अकाउंटिंग करेंगे. टरबाइन पार्ट सेपरेट एंड अदर पार्ट सेपरेट, जैसे पिछले प्रॉब्लम में किया. मोटर प्लांट पार्ट सेपरेट, अदर प्लांट सेपरेट. यस सर, अंडरस्टूड. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ये कंपोनेंट अकाउंटिंग को बढ़ावा देता है. सो हम लोग क्या नया सीखे, कंपोनेंट अकाउंटिंग. सर कंपोनेंट अकाउंटिंग कब एप्लीकेबल होगा, जब बेटा लाइफ डिफरेंट रहेगा. जब लाइफ डिफरेंट रहेगा. सर हमें कैसे समझ आएगा, सर गिवन ना क्वेश्चन में. Why are you asking such silly questions? It's given in the question, lives are different. And whenever lives are different, you have to do component accounting. So S10 promotes component accounting. Yes. It suggests component accounting. Also present value. Yes. If component accounting value is not available, you have to calculate present value. So present value in financial management, we are going to solve many questions of present value. Foundation students also solved, but our direct entry students, I will teach you how to calculate present value. So don't worry. I will tell you steps to calculate present value and you will get the answer on Calc. See, remember, present value is always less than future value. And how to get the less answer? Divide. When we divide, we'll get the less answer. When we'll divide, we will get the less answer. Okay. So direct entry student, डरने का नहीं, बिल्कुल भी. I am with you. Okay. हाँ जी सर, एकदम मस्त समझ में आया. Okay. एक ही मिनट. ठीक है भाई, अभी देख लीजिए हाउ टू सॉल्व. बड़ा ब्रेक लेना है. वेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल, टर्बाइन and other part. Cost incurred. What is the cost incurred, beta? 1000 lakhs, rupees in lakhs.
rupees in lakhs. What is turbine value after 6 years? 450. But what is the present value? Red pen. Present value divide. How much percentage beta FD का? How much percentage? FD का परसेंटेज कितना है बेटा? बेटा आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था. डोंट वरी बेटा, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट. आई नो यू आर गोइंग टू सॉल्व इट once again. 8% for 6 years. So after 6 years, this is a value. So divide by 1 plus R. 8% means 0.08. What is the formula? 1 plus rate of interest. This is how we calculate present value. So take on calci. 450 divided by 1.08 and press is equal to button 6 times. Is equal to 2, 3, 4, 5 and 6. I'm getting the answer 283.58. And so what is the other part? 716.42. And see beta, इसका life 6 years और इसका life 10 years. Okay. So this is how you have to solve this question. Easy लगा? अरे easy लगा क्या? Then Roman 2, depreciation for 6 years. Roman 1 divided by 6 into 6. Life is 6. Roman 1 divided by 10 into 6. So this is same 283.58. Depreciation for 0 to 6. And here depreciation is 429.85. WDV after 6 years 0 286.57. Therefore, WDV after 6 years continued asset plus new turbine. Continued asset कितना है? 286.57 plus 450 736.57. See the answer 736.57. Yes. Everything is cleared beta. Everything. And last question है 18. All TYK questions are important one. All. Breath Limited intends. Chalo, last question.
and then we'll take a break. चलो नहीं तो ले लो, ब्रेक ले लो. चलो, I know now you are बेटा आउट ऑफ ये 18 ब्रेक ले लो. And we will meet at, बेटा आज थोड़ा लेट हुआ है, 7:40. But I don't think you are finding any difficulties now. Yes, you think is difficult or easy? प्रेजेंटेशन भी लिख के दिया मैंने. हाउ टू राइट द एग्जाम में आंसर. चलिए, मनीष जी ब्रेक ले लीजिए.
Chalo beta. Welcome back once again. I know now almost we are done with this all part of the standards. So now we'll move to main part, measurement. So what a measurement of property, plant and equipment. See beta, there is no electricity. Okay, now we'll definitely understand theoretical part. If you think this standard is difficult one, yes, definitely. Because many new concepts are now introduced by the accounting standard 10, because previously there was no such concept like you know major these concepts of replacement or major inspection, your previous inspection part. So that concept were not there in the accounting standard 10. That was very easy as 10. But now after introduction of IFRS and Ind AS, accounting standards are definitely are at next level. So these concepts are very different one. So what is the replacement cost? What is the major inspection cost? And we have seen all these concepts now, revaluation and component accounting. So component accounting, now it's for you, it will be very easy. So now let's start with measurement part. So sorry, there is no electricity, so you can see the shadow over there. तो आपको ये ध्यान में आएगा ही. तो बेटा अभी हम लोग करते हैं measurement part. Measurement at recognition, it is at cost model, and after recognition there are two models, cost model and revaluation. So what is cost model? Cost model is what is cost includes purchase price, directly attributable cost, and restoration and dismantling. So dismantling cost, what is we are going to dismantle, means present value will consider, and excludes opening of new business. Yes, now you understood. Promotional activities. Yes, sir, understood. Relocation, we never consider. And administration overhead. Purchase price beta includes import duties, deduct trade discounts. So we already solved one question on this. Directly attributable cost, location or condition except cost incurred at the less than full capacity beta, we never consider. Initial operating losses, I already explained you, and cost of relocation from one ship place to another place. So theory is very easy for you now. Cost of site preparation we included, initial handling cost, installation cost we included, and professional fees, cost of testing, and cost of employee benefits. Restoration cost or dismantling cost. Dismantling, removing, and restoring cost is also considered estimated cost, and it is at present value. Such costs are include PP other than the produce inventory, capitalize and produce inventory, so we'll consider it as a part of S2. For self-constructed assets, internal profits are never considered. Now, what is internal profit? Suppose I've bought one raw material at ₹10 and I transfer it to another department where asset is constructed, where asset construction is going on for ₹12. So internal profits. So I bought it at 10 from in department A and I transfer it to department B where asset is self constructed. Self construction अलाउड है क्या? यस बेटा, मैं खुद ही आके कंस्ट्रक्शन करूंगा. जैसे कंप्यूटर, कुछ लोग कंप्यूटर डायरेक्टली बाय करते हैं, कुछ असेंबल करते हैं. असेंबल मतलब ये पार्ट इधर से, वो पार्ट उधर से. सो असेंबल. So ultimately all cost will be added. But suppose if I bought one part at ₹10 and I transfer it at ₹12, and when I calculate the cost of this fixed asset, I won't consider 12. I will consider 10 only. Internal profits is not considered. So 10 का 12 पे ट्रांसफर किया तो भी 10 पे ही रिकॉर्ड करना है. Abnormal amounts beta, S2 mein we have seen that normal versus abnormal. Abnormal we never consider. And income and related expenditure of incidental operation will be excluded. So you can consider it in the asset. Interest component beta as per S16. So next standard is the S16. After 13 there is S16. So you will understand what is qualifying asset. Bearer plant beta self construction allowed hai.
हाँ जी बेटा, ये सिचुएशंस. Deferred payment is specifically excluded. Deferred payment interest part, principal amount we'll consider, interest part we won't consider. Now this is something very new concept. Asset के बदले में asset, asset in exchange of asset. So this is your homework. I'm not going to explain you. You will read it. Okay. So from asset के exchange में asset. So this is your homework. Beta, now we are going to see the theory part. So have patience. So asset के बदले में asset where you will get in the study material. Yes, let's see where you will get this information. हाँ. Yes. This chart. This is your homework. Page number 5.36. Asset against asset. Then you have next part. PP purchase for consolidated price. Consolidated price beta means what? Consolidated price means you have purchase assets in the, you know, group of the assets. PP held by lessee, lease we do not have now, S19, and last one is government grant is also covered under S12. So these two beta I'm not going to teach you now, but there are only 5 situations. So how many situations are there? एक बार हिंदी में बोलता हूँ बेटा, 5 situations हैं. 5 सिचुएशन में से पहला सिचुएशन ये कि पेमेंट इज इन डेफर्ड, मतलब आपने लोन पे एसेट लिया तो जितना प्रिंसिपल अमाउंट है वो एसेट में ऐड होगा, इंटरेस्ट अमाउंट ऐड नहीं होगा. दैट आई एम गोइंग टू टेल इट नाउ. दूसरा पार्ट है कि एसेट के बदले में एसेट लिया, फॉर एग्जांपल एसेट एक्सचेंज करके दूसरा एसेट लिया, तो वो मैं आज नहीं सिखाऊंगा आपको. दिस इज योर होमवर्क. सो एवरीवन विल रीड थ्योरी. पेज नंबर भी बता दिया है मैंने. एसेट इज परचेस एट कंसोलिडेटेड प्राइस, मतलब आपने झुंड में एसेट लिया. एक मिक्सर लिया, एक एसी लिया, एक टीवी लिया, एक फ्रिज लिया, तो आपने झुंड में एसेट लिए एक ही प्राइस पे. पीपी हेल्प फॉर फाइनेंस लीज, एंड पीपी हेल्प फॉर फाइनेंस लीज जो है वो मैं S19 के अंदर बताऊंगा. एंड S12 गवर्नमेंट ग्रांट, ये आज नहीं देखेंगे हम लोग. गवर्नमेंट ग्रांट को S12 के अंडर देखने वाले हैं, सो डोंट वरी. Payment is deferred beyond normal credit terms. So already I explained you. So deferred means what? Deferred means in installments. Okay. So you will calculate principal amount. Okay. So मेरा total payment में 20,000 every month कर रहा हूँ. 20,000 into 5 months. So 1 lakh is my including interest. And excluding interest asset is 90,000. So I should record 10,000 interest है. So that table will give you the bifurcation, principal and interest. तो principal और interest का bifurcation आपको मिल जाएगा. And you will calculate your asset at principal amount. तो आप लोग कौन से value पे लेने वाले हो? You will record it at principal amount. इंटरेस्ट P&L में जाएगा. इंटरेस्ट किधर जाएगा? ओवर द पीरियड इन P&L. पीपी इज एक्सचेंज फॉर कमर्शियल सब्सटेंस के बारे में लाइट आ चुकी है, लैकिंग एंड नॉट लैकिंग. सो बेटा अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इट इज योर होमवर्क. एसेट इज परचेस एट कंसोलिडेटेड प्राइस. फॉर एग्जाम्पल मैंने जून में 1 लाख में पूरे एसेट्स लिए, ABC. ए इज 50,000, इसकी फेयर वैल्यू. बी की है 30,000 और सी की है 20,000, सॉरी, और मैंने खरीदे ये 75,000. सो फेयर वैल्यू इज 1 लाख. So I will divide 75,000
in the ratio of 5:3:2. So I will record asset A not at 50,000. I will record 75,000 divided by 10 into 5, 37,500, 22,500, 15,000. So asset is recorded at 1 lakh is a fair value, but we will divide it 1,75,000. We bought it at 75,000. देखो एसेट की फेयर वैल्यू जो है मार्केट में, ए एसेट 50 में मिल रही है, बी एसेट 30 में मिल रही है और सी एसेट 20 में मिल रही है. बट क्या हुआ, 1 लाख रुपए देने के बदले में मैंने तीनों एसेट लिया, तो मुझे सामने वाले ने ग्रुप डिस्काउंट दिया, तो 75,000 में सभी एसेट आए. तो 75,000 को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, एसेट ए में 37,500 में रिकॉर्ड करूंगा 5:3:2 रेशियो में. ओके, ये एस 19 के अंडर कवर होगा and government grant is 12 के अंडर कवर होगा. So we are not going to see that. After recognition, बेटा cost model. So after recognition means after certain years you revalued that asset. You have option to revalue. जैसे 25 lakhs हमने revalue किया. Otherwise you can continue with that 22,60,000. That is a cost model. So cost means what? Cost minus till today's depreciation. Up to 4 years we have depreciated. No. And minus impairment. Now, beta, what is impairment? Impairment, we are going to see one accounting standard 28. So don't worry, S28 में मैं आपको explain कर दूंगा. Revaluation model. Asset fair value पे record करना. 22,50,000 का 90,000 I think and 25 lakhs. So 2,10,000 something आया था ना revaluation. Okay, so revaluation करना. When to do revaluation? If there is no more volatility, मतलब ऐसा बहुत सारा चेंज नहीं हो रहा है, तो विद इन 3 to 5 years significant होगा, तो every year annual revaluation. So every year your values are getting changed significantly, and insignificant 3 to 5 years means there are no many changes, तो 3 to 5 years. So बार बार मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी, आज 1 लाख तो कल 2 लाख, परसों वापस 1.5 लाख, तो एवरी ईयर कीजिए. 1 लाख का 1,05,000, 2,000, 1,000, 1,01,000, इतना ही फर्क पड़ने वाला है, तो 3 से 5 सालों में करो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है तो सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है तो इनसिग्निफिकेंट. Accumulated depreciation is either netting up or grossing up. That I will tell you now. Wait. I will explain it. Don't worry. Revaluation. Now this chart is very important. Increase, decrease. Yes. I will explain it through example. Okay. Suppose, now it will be easy for you. Land. This example I already covered at foundation level. Okay. And those students who were not there for foundation, they can see how to revalue the asset. Yes. See how to revalue the asset. But who is doing this revaluation? Technical people. We are not there. Okay. We are, as a chartered accountant, we are not interested in doing better. We are only accountants. So they will give us figures and we will record it. Okay. So revaluation, for that we required degree in asset valuation. So that valuation officer will help you out. Okay. So we people, बेटा, we are not interested in doing that. तो आप टेंशन मत लीजिए, कि आपको ये ध्यान में रखो, वहां पे कुछ एग्जाम होती है, वो एग्जाम को पास करना पड़ता है, तो रिवैल्यूएशन होता है. तो हम लोग उसमें वी विल नॉट इन्वॉल्व इन दैट. रिवैल्यूएशन भी हम लोग अकाउंटिंग में इन्वॉल्व है. ओके. सो आप सब में इन्वॉल्व नहीं रह सकते. चलो आगे बढ़ते हैं. तो रिवैल्यूएशन क्या है सर? रिवैल्यूएशन के बारे में चर्चा करेंगे. ओके. सो लैंड 100 रुपीज की थी. व्हाट इज द बुक वैल्यू? 100. देन बेटा आफ्टर 1 ईयर you think that land is 120. This is case 1.
So there is upward revaluation, 100 का 120. So entry will be land account debit, 100 का 120. So land is increasing. So asset has debit balance, asset debit. So land account debit to revaluation surplus. So what is the balance in revaluation surplus? 20. This is case 1. Case 2, it might happen that your asset goes down. So there is no relation, case 1 or case 2 ka. There is no relation, case 1, case 2. Downward asset means asset goes down. So asset को credit देना है, reverse to land. And P&L is debited. See, revaluation surplus is credited and P&L is debited. So there is a difference. If there is upward revaluation, ऊपर जाएगा तो revaluation surplus, नीचे जाएगा तो P&L, नीचे जाएगा तो P&L. Got the concept? Yes. P&L to land. Revaluation initial. Now बेटा केस 1 को कंटिन्यू करेंगे. We will continue with 3 situations. Subsequent, initial, and then after 1 year. Revaluation to 150. So 120 का 150 हुआ. ऑलरेडी कितना बैलेंस है रिवैल्यूएशन में? 20. क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट. So 120 का 150. So asset बढ़ाना है. You have to increase the asset. So land account debit 30 to revaluation surplus because already we increased it. 120 का 150 हुआ. Revaluation to 105. So 120 का डाउन करके 105. Now beta asset is decreased. So revaluation surplus to land 1515. And revaluation beta, because already there is a balance of 20 and now 20 ko you want to decrease to 105. Okay, so 105. So decrease, but there is balance in revaluation. So balance in revaluation. So 20 rupees already balance tha. So we can use that balance ना. 20 का 15 से नीचे लाना है. तो still revaluation surplus is equal to 5. And revaluation to 90. तो बेटा 120 का 20 बैलेंस था. तो first we will use 20. Then we want to down it by 90. मतलब 30 से नीचे आना है. 120 to 90. 30 से नीचे आना है. So P&L debit 10. See, we cannot give debit more than its balance. Balance is 20. तो एक बार हिंदी में बता देता हूं. देखो बेटा पहले 100 रुपए की एसेट थी. एक बार ही समझाऊंगा. नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो देखना. क्योंकि बेटा ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है. मैं कितना भी समझाने की कोशिश करूंगा पहले झटके में समझ में आना चाहिए. नहीं तो ये स्टैंडर्ड वापस से देखो. इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ 2 to 3 टाइम्स यू वॉच द सेशन फॉर 2 to 3 टाइम्स. ओके, देखो 100 रुपए की एसेट थी, बराबर है. एसेट 100 की हो गई 120 एक साल बाद. एक साल बाद हमने क्या किया? 100 का 120 कर दिया. एसेट बढ़ा रहे हो तो एसेट को डेबिट आएगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट आएगा. 2020 100 का 120 हुआ. अभी 120 का 150 हुआ बाद में वापस. अच्छी बात है, 120 को और बढ़ाओ. तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन सरप्लस. याद रखना रिवैल्यूएशन सरप्लस को हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है. कौन सा बैलेंस होता है बेटा? हमेशा क्रेडिट बैलेंस. अभी क्या होगा? अभी 120 का 105 हुआ. मतलब 120 था, नीचे आया 105. सर 20 से तो ऑलरेडी इंक्रीज हुआ था और 15 से नीचे आना है. तो बैलेंस है ना, 20 का बैलेंस है ही था तो उसको नीचे लाना है. सो P&L को डेबिट नहीं देंगे, पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस खत्म कर देंगे. बैलेंस है 20 रुपए का, तो 20 रुपए का बैलेंस है, उसमें से 15 रुपए हमने खत्म किया. ओके, तो सपोज आपकी घर की, आपने पिगी बैंक में 50 रुपए जमा किया. 50 रुपए जमा है तो इधर 20 रुपया जमा है. कितना है? पिगी बैंक पकड़ के चलो, 20 रुपया आपका जमा है आपके अकाउंट में और अभी आपको 15 रुपए यूज करना है.
तो है ना अकाउंट में पैसा, मतलब आपके पास 15 रुपया यूज करने के लिए बैलेंस है। तो बेटा तब आप लोग क्या करो, आपके जेब से पैसा यूज करो ना, मम्मी पापा को क्यों पैसा मांग रहे हो, 15 रुपया उसी में से यूज करो। तो 20 का 15 से नीचे आया, तो अभी भी कितना बैलेंस है आपके पास, 5 रुपया। अभी आपने 20 रुपया आपके बैंक में डाल के रखा था, मतलब आपके पास रखा था 20 रुपया, और अभी वो 100 का 120 हुआ था तब, अभी 120 का 90 हुआ, 90 हुआ मतलब 30 रुपए से डाउन हुआ। अभी डाउन हुआ है तो तेरे पास कितना बैलेंस है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, 20 रुपया बैलेंस। अभी मम्मी पापा के पास जाएंगे, मम्मी पापा बोले तो पी एंड एल, मम्मी पापा बोले तो पी एंड एल लॉस में रिकॉर्ड करने का, फिर 10 रुपया। पहले खुद का पैसा यूज करने का, खुद का पैसा रिवैल्यूएशन सरप्लस, वो नहीं रहेगा तो फिर पी एंड एल में जाने का। ओके, वेरी इजी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 5 था, यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस 0 आएगा, खत्म हो गया ना। फिर पी एंड एल को डेबिट आया। ओके, क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें कुछ है ही नहीं मैं बच्चा, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। सो रिवैल्यूएशन ऊपर जाता है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, नीचे आता है तो पी एंड एल, पर सब्सिक्वेंट में ध्यान में रखना है, सब्सिक्वेंट में ध्यान में रखना है। ओके बच्चों, एकदम इजी है बेटा, एकदम इजी। हाँ जी, मुझे पता है आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एकदम बेटा, एकदम इजी इजी करके लगते हो, कैसे एकदम इजी करते हो रे। हाँ जी सर, अभी क्या होगा, अभी देखो 70, 70 मतलब डाउन, पी एंड एल में अभी ये पी एंड एल में 30 रुपए डेबिट बैलेंस है, पी एंड एल में कितना बैलेंस है, डेबिट 30। हाँ, नाउ सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन टू 60 और डाउन, कितने से 70 का 60, तो डाउन करना है तो एसेट को क्रेडिट, पी एंड एल को डेबिट, पी एंड एल टू एसेट। 70 का ऊपर 85, 85। ओके, ऊपर सर, ऊपर गए तो रिवैल्यूएशन सरप्लस, सर इफ इट इज इंक्रीज देन रिवैल्यूएशन सरप्लस, बट वेट वेट वेट, यू ऑलरेडी हैव डेबिट बैलेंस इन पी एंड एल, तो फर्स्ट यूज दैट ना, फर्स्ट यूज दैट। ओके, सो एसेट 15, 70 का 85, एसेट 15, लैंड अकाउंट 15 टू पी एंड एल अकाउंट, बिकॉज पी एंड एल डेबिट बैलेंस, नाउ वी विल गिव क्रेडिट। तो अभी भी पी एंड एल में कितना बैलेंस है, डेबिट 30 माइनस 15, स्टिल 15 इज अ डेबिट बैलेंस। एंड नाउ रिवैल्यूएशन टू 110, 70 का 110 हुआ, लैंड अकाउंट डेबिट 40 टू पी एंड एल अकाउंट, फर्स्ट विल यूज दैट टू revaluation surplus 10. So balance in P and L, 0 in P and L, 30 का 30, and revaluation surplus 10 credit. Revaluation surplus 10 credit. Easy or not? Easy or not? Tell me easy or not? So this is revaluation. This is revaluation. See, check. I will give you one example. First time 500, then 580, 580 initial, and then 460. Yes, tell me. 460. Answer.
See the entry. Here, land to revaluation surplus 8080. Land to revaluation surplus 8080. Then 580 का 460. 120. Revaluation surplus 80. P&L 40. Very good. And to land 120. To land 120. So first time 500 ka 580. Land to revaluation surplus 8080. And then 580 ka 460 means 120 down. First we will use revaluation surplus and balancing figure is P&L. Right? Chalo. But a depreciation is nothing but divide over the useful life. So depreciable amount means what? Cost minus salvage value. So cost minus salvage value. Salvage value means, yes, you already studied depreciation at foundation level and at BCom level also. Salvage value means I bought one asset at 1 lakh. And suppose if I'm getting the residual value at the end, 20,000. So I will divide only 80,000 amount over useful life, on the systematic basis. Systematic is method of depreciation. So it might be straight line method and useful life is the period for how many years. Okay. So straight line method, depreciation is transferred to P&L, or it might be carrying amount at the other asset. So it might be, suppose if that specifically you are using that asset for any project, you will divide it over that project, that depreciable amount. Okay. Depreciation method, straight line method, diminishing balance method, units of production method, and revenue based method is not allowed. Revenue based method is not allowed. Huh? Revenue based method is not allowed. It is consumption based. Consumption based. Revenue based is not allowed. For example, I'm getting the assets ka revenue. For example, if I bought one, Ola car, and Ola car, I bought one so first year I'm getting 10,000 revenue. Second year I'm getting 25,000 revenue. Third year I'm getting 35,000 inflow. So in this ratio, I will divide depreciation. Not allowed, beta. Not allowed. You can use either straight line method or WDV method or units of production method. Okay. When to start the depreciation? When asset is available for use, not put to use. Okay. Method 1, method 2, grossing up. Asset is greater than residual value, is greater than carrying amount. For example, your residual value is 20,000 and your carrying amount is 18,000. So beta, you will stop your depreciation. And when method 2 beta, when earlier date, when it is retired from the active use. So asset does not have any use and you are going to sell it. But beta, you are waiting for proper deal. Okay. So held for disposal or asset is derecognized. Means you removed it, scrapped it, or you sold it. Then beta, and no cessation when asset is idle. Still depreciation is going on and retired from active use unless it is fully depreciated. However, in usage method, depreciation is 0. So consumption method hoga to 0. Change in decommissioning charges is treated as change in the liabilities. अभी बेटा ये जो है ना इसके क्वेश्चंस ही सॉल्व करने पड़ेंगे. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये मैं आपको बाद में बताऊंगा. Add it in asset. Retirement means I beta already explained when asset is retired from the active use, the carrying amount, same problem. Okay, retirement. So we transfer it to profit and loss account and realizable value is cash account debit. Derecognition on disposal, the difference is recorded in P&L. And last part is a disclosure of the standard, general, additional, and revalued asset. You have to disclose it. Additional, I already shown you in the ITC report. So revaluation वगैरह आपको बताना पड़ेगा. So today's homework, beta, you finish the standard properly. Read it all study material questions. And in next session, beta, we are going to see some illustration part. I think I will need one extra session for accounting standard 10. Okay. And 13 के लिए भी एक extra half session लगेगा. So I will ask institute to give me extra session. Thank you. Take care. Bye bye.